Hi everyone, welcome back again to my channel. This is Shalini and I have come up with another topic, that is figures of speech part 2. In this I will be discussing with you another poetic devices like personification, hyperbole, pun, irony or paradox, and last one is rhythm. So in my previous video I have discussed with you about figures of speech part 1, and in the previous video, I have discussed with you part 1, that is simile, metaphor, alliteration and repetition. If you want to understand those topics or those poetic devices, you can have the link in my description. You can go and you can watch those particular videos. So in order to give you the quick reminder or as a sort of recapitulation, let's proceed further by saying that literary devices are also known as poetic devices and figures of speech. So if we talk about its quality, then basically these are created by the poets in order to create unique impression in his poem, and moreover to make his poetry appealing, interesting and attractive one. So this is the best way to grab readers attention with the help of simile, then assonance, rhyme, rhythm, paradox, and many more. Okay, so the first poetic device of today's lesson is personification, and it is one of the poetic devices where a particular object or an object is given human attributes. किसी भी ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, को रिलेट किया जाता है, सो दिस इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. एंड द एग्जाम्पल गोज विद इट. आपकी जो 12th क्लास की पोम है माई मदर एट 66, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, आप इमेजिन कर सकते हैं ट्रीज दे आर मूविंग, दे आर रनिंग. एक्चुअली दिस इज़ नॉट देयर बट इट इज़ एज्यूम्ड. नेक्स्ट है आपकी मिरर पोम से, वेयर द एग्जाम्पल यू आर हैविंग आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट. लाइक मिरर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इट इज़ एज्यूम्ड, इट सेज आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सॉन्ग ऑफ द रेन, वेयर द रेन ड्रॉप सेज I am dotted silver threads dropped from heaven. And the last example goes with it, face of the earth as it can teach us. So this is the example which is taken from the poem Keeping Quiet. Next poetic device is hyperbole. It means to overcast something or to ओवरस्टेट a पर्टिकुलर स्टेटमेंट. लाइक किसी भी मैटर को, किसी आइडिया को, किसी पर्सन को जब एग्जैजरेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर आइडिया को हाईलाइट करने के लिए. सो द एग्जाम्पल यू आर हैविंग, हिज फादर इज़ एज ओल्ड एज हिल्स, कि हम उसके ग्रैंडफादर की एज को हाईलाइट ना करते हुए वी आर कंपेयरिंग इट, वी आर एग्जैजरेटिंग दिस आइडिया विद अनदर टर्म्स. ओके, जिसको हाइपरबोल या हाइपरबोले भी कहा जाता है. एंड द अनदर वन एग्जाम्पल यू आर हैविंग, अनदर एग्जाम्पल है शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे. लाइक आप देखेंगे कि व्हेन साइलेंस इज देयर तो पिन जो ड्रॉप होती है, पिन के गिरने की भी साउंड होती है, इट कुड बी इजीली एक्सपीरियंस्ड. ओके, एंड द नेक्स्ट वन पोएटिक डिवाइस यू आर हैविंग पन, as it is clear from the name itself, it indicates or it highlights that particular words, they look similar or they look identical, but in actual sense they are sharply contrasting or they are having opposite meanings. Example, from Keeping Quiet poem I have taken, that is not move our arms. तो आप देखेंगे arms word का meaning क्या होता है. arms is related with एक हमारी आर्म्स इज़ रिलेटेड विथ टू सेंस. वन इज़ हमारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे, इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल ऑर्गन्स. अनदर वन इज़ रिलेटेड विद वेपन्स, जो वॉर के टाइम पे जिनको यूज़ किया जाता है. अनदर एग्जाम्पल इज जॉन डन, who on his imprisonment writes a letter to his wife. So the quote or the line which is taken in the poem, that is John done and done undone. Okay, next poetic devices that you can use, that is irony and paradox. These are two similar names which you could use any one of them. It refers or it asserts the truth, जिसमें truth को
Here truth is highlighted, like what is, if any particular situation, in which manner it is said or it is shown or displayed, or at the end what actually happens, these are not at all same. So बहुत ही strong example this I have taken from P.B. Shelley poem, that is Ozymandias. आप देखेंगे जिसमें बहुत ही पॉपुलर कोट है, माई नेम इज़ ऑजीमैंडियाज द किंग ऑफ द किंग्स. इट मीन्स कि ऑजीमैंडियाज जो किंग ऑफ किंग्स कंसिडर होता है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो स्प्लेंडर है, इट इज़ हाईलाइटेड, बट एट द एंड everything leads to destruction. Everything is going to be finished with the passage of the time, as time is considered as great ruler. And the last one is rhythm. जैसा कि नेम से ही क्लियर है, a sort of musical pattern or musical pattern or format is settled in order to grab readers attention. एक म्यूज़िकल इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए एक रिदमिक टोन को, जो रिदमिक पैटर्न है, उसको फॉलो किया जाता है पोम में. सो द एग्जाम्पल फ्रॉम राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जो एस.टी. कॉलरिज की पोम है. सो इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड, इट रोड एंड हाउल्ड. एंड अनदर वन एग्जाम्पल, another musical pattern that is followed, day after day, we struck nor breath nor motion. Okay, so I hope you have understood all the poetic devices of figures of speech or literary devices which I have used here. I have given you the description along with multiple examples. With the help of these examples, you can understand these poetic devices. Don't go for rote learning कि इस poem में we have to understand the concept कि poetic devices को identify करने के क्या ways हैं. This I have taught. Just go it thoroughly. Okay, take the description along with multiple examples. After that, any sort of poetic devices you can understand and you can easily identify. Thank you so much. Stay tuned for my forthcoming videos, and very sure I will be uploading FOS part 3. Thank you so much.